हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग जिला। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ रिएक्ट जेएस की एक न्यू सीरीज जिस पे आज हम सीखेंगे JSX। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। JSX वीडियो के अंत तक बने रहा है जिससे आपको सारी चीज़ें कवर हो सकें और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों JSX होता क्या है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, JSX का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था। JSX स्टैंड फॉर द जावास्क्रिप्ट XML लाइब्रेरी। JSX allow us to write HTML in React. JSX makes it easier to write and add HTML React. JSX allow us to write HTML element in the JavaScript and place them into the DOM without creating the method create element and append child method. Without method create किए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, जावास्क्रिप्ट में मेथड क्रिएट करना पड़ता था। अपेंड चाइल्ड करने के लिए हमें दो फील्ड ऐड करनी है कि एक पर क्लिक पे दूसरा अपेंड हो जाए तो फिर अपेंड चाइल्ड लगाना पड़ता है। JSX हमें क्यों यूज करना चाहिए? रिएक्ट एम्ब्रेसेस द फैक्ट ऑफ द रेंडरिंग लॉजिक एंड इनहेरेंटली coupled with other UI logic, how events are handled, how the state changes over time, and how the data is prepared for the display. Instead of artificially separating technology by putting markup and logic in separate files, React separate concerned with the loosely coupled unit called components that contain both. React doesn't require using JSX, but most people find it helpful as a visual aid when working with UI inside the JavaScript code. It also allows React to show more useful error and warning messages. Expressions in JSX. With the JSX, you can write expressions inside curly braces. The expressions can be React variable or property or any other valid JavaScript expression. JSX will execute the expression and return the result. जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, जैसे हमने एक कॉस्ट वेरिएबल लिया माई एलिमेंट नाम से, उस पर हमने क्या डाला, एक HTML का टैग डाला H1 और उसके बाद हमने लिखा React is 5+5, करली ब्रेस में लिखा हुआ है 5+5, तो ये होगा ऐड कर देगा किसको 10 करके हमें ये रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, H1 के अंदर। JSX is expression 2. After compilation, JSX expressions become regular JavaScript function called the evaluate to JavaScript object, and this means that you can use JSX inside of if statement and for loop assigned to the variable and expect it as argument and return it from function. Nested element in JSX. To use more than one element, you need to wrap it with one container element. Here we use div as a container element which has 3 nested elements inside. JSX attributes here. The JSX use attributes with the HTML elements same as regular HTML. JSX uses a camel case naming convention for the attribute rather than standard naming convention of the HTML, such as class in the HTML become class name in JSX because the class is the reserved keyword in JavaScript. We can also use our own custom attribute in JSX. For custom attribute, we need to use data prefix. We have used custom attribute data demo attribute as an attribute for the p tag. तो फ्रेंड्स, JSX आज हमने देखा और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम JSX पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।